discussion with simplified definition of these three terms: atomic mass, molecular mass, and molar mass. Atomic mass is mass of one atom, एक single atom का mass. Number 2, molecular mass, which is mass of single molecule. Next term is molar mass, which is mass of 1 mole. In another word, it is mass of 6.022 into 10 to the power 23 particles. So that's what makes it different from atomic and molecular mass. Atomic molecular mass is about mass of one particle, while molar mass is about mass of 6.022 into 10 to the power 23 particles. अब ये particles atom भी हो सकते हैं और molecules भी. अगर हम 6.022 into 10 to the power 23 atoms की बात कर रहे हैं, तो इसके mass को हम कहेंगे gram atomic mass. और अगर हम 6.022 into 10 to the power 23 molecules की बात करें, then it will be gram molecular mass. So molar mass की दो categories हैं. First, gram atomic mass, which is abbreviated as GAM, and another is gram molecular mass, which is abbreviated as GMM. Now let's consider an example of nitrogen. आपने देखा होगा कि हम नाइट्रोजन के मास को कभी-कभी 14 U लिखते हैं और कभी-कभी 14 ग्राम. So what is the difference between these two? So when we are writing 14 U, in that case we are talking about atomic mass, mass of one atom. And when we write 14 gram, then we are talking about gram atomic mass, 1 mole atoms का mass. So it is necessary to make distinction between these two. Till now, you might be aware of some basic atomic masses, like carbon का atomic mass होता है 12U, nitrogen का 14U, oxygen का 16U. But you might be wondering, do we need to learn all 118 elements atomic masses? And the answer is no, you don't need to. 118 elements में से कुछ 28-30 एलिमेंट है जिनके atomic mass याद होने चाहिए. So I am adding those atomic masses here. I will suggest you to pause and write it down. So do you need to cram this list? No, not at all. जैसे जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाएंगे, you will gradually learn all these atomic masses. और वो एलिमेंट्स जो इस लिस्ट में नहीं है, like thorium, zirconium, tungsten, you will be given their atomic masses if they come. Now the next thing is calculating molecular mass. Water, calcium hydroxide and Na2SO4 10H2O. अगर आप इन तीन मॉलिक्यूल का molecular mass निकाल सकते हैं, then you can calculate molecular mass of any type. Let's start with water. Molecular mass निकालने के लिए हमें इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एटम के मास को ऐड करना पड़ेगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. सो वाटर के केस में हमारे पास हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 × 1 + 16 एंड इट विल बी इक्वल टू 18. और क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, सो वी विल राइट 18U. नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो इनिशियली इसका स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक कैल्शियम एटम है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन है. कैल्शियम का मास होता है 40, सो वी विल राइट 40 एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल बी 16 + 1. और क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, सो वी विल राइट 2 × 16 + 1 एंड ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट 74U. नाउ Na2SO4 10H2O. इसमें 2 सोडियम है, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 10 वाटर मॉलिक्यूल. सो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का 18. सो इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 × 23 + 32 + 4 × 16 + 10 × 18. So you can calculate it by yourself. What is the result? Put it in the comment section. So basically आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए. If you are saying Na2SO4 10H2O, it means we have 10 H2O molecule and not 10 H2 and 1 oxygen molecule. Water के केस में mass can be written as 18U or 18 gram. When it's 18U, it is molecular mass, and when it is 18 gram, then it is gram molecular mass. Now let's see relation between 1 mole and molar mass and molar volume. 1 mole, as we know, it is 6.022 into 10 to the power 23 particles. Atom के केस में 1 mole will be 6.022 into 10 to the power 23 atoms. और इतने atoms का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर. Next is molecule. Molecule के केस में 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. और इतने molecules का मास होता है ग्राम molecular mass के बराबर. Now relation between mole and molar volume. This relation is used for gaseous particle. और इस केस में 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 gaseous particle. और इतने particles का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है. और इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. As we know, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने पर गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है. So 1 mole is equal to 22.4 liter at standard pressure and temperature condition, STP condition. And STP condition means pressure should be 1 atmosphere and temperature should be 273 Kelvin. No matter which gas we are talking about, carbon dioxide, ammonia, sulfur dioxide, sulfur trioxide, 1 mole is always 22.4 liter at STP condition. So here we have 4 formulas that will help you solve any kind of mole concept numericals. Now let's understand each formula one by one. First one is for atomic substance. So atomic substance के केस में number of moles का formula होता है number of moles is equal to given mass by gram atomic mass. Short form में we can write it as N is equal to M by GAM. Next one is for molecule. It is number of moles is equal to given mass by gram molecular mass. And in short form it is written as N is equal to M upon GMM. और अगर gaseous substance की बात करें then it will be number of moles is equal to volume at STP conditions in liter divided by 22.4 liter. And in short form, it is written as N is equal to V by 22.4 liter. In case you are given number of particles, like number of atoms, number of molecules, or number of ion, then use this formula. Number of moles is equal to number of particles upon Avogadro number. In this case, Avogadro is nothing but 6.022 into 10 to the power 23 particle. So in short, we will write it as small n is equal to capital N upon Na. Now we will learn how to use these formula. So let's do some numericals. Our first question is to calculate number of moles in 392 gram of H2SO4. इस क्वेश्चन में हमें number of moles निकालना है and we are dealing with molecular substance. So we will use N is equal to M upon GMM. यहाँ पे given mass है 392 ग्राम और ग्राम molecular mass calculate करना होगा. So gram molecular mass of H2SO4 will be 2 × 1 + 32 + 4 × 16. And on calculating it, we will get 98 gram. So we know M and GMM. We will put it here and calculate number of moles. Next question. Calculate number of moles in 44.8 liter of carbon dioxide at STP. So we will use N is equal to V at STP upon 22.4. Now, volume at STP condition in this question is 44.8 liter. So just put it here and calculate number of moles.
So that's how we convert grams to moles or liters to moles. In some question, we need to convert moles to grams or moles to liters. ऐसे केस में भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे. Let's understand it with this formula. N is equal to m upon gmm. अगर आपको मोल्स दिया हुआ है एंड यू वांट टू कैलकुलेट मास ऑफ द सब्सटेंस एंड दिया हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे. सो इनकी वैल्यू डालने के बाद यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ द सब्सटेंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3. इस क्वेश्चन में हमें यह पता लगाना है कि 53 ग्राम Na2CO3 में सोडियम एटम, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम कितने हैं. तो इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल निकालेंगे और नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स. सो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. गिवन मास इज 53 ग्राम. On calculation, you will get gram molecular mass equals to 106 gram. So N is equal to m upon gmm. M is 53 and gmm is 106. So on putting it, we will get 0.5 mole. And we know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So 0.5 mole will be 0.5 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So we will get 3.011 into 10 to the power 23 molecule. Now next step. In one molecule of Na2CO3, there are 2 sodium atom, 1 carbon atom and 3 oxygen atom. So अगर Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम एटम है तो 3.011 into 10 to the power 23 molecules में कितने होंगे? It will be 2 into 3.011 into 10 to the power 23. एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है. So 3.011 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स में 3.011 into 10 to the power 23 कार्बन एटम होंगे. Similarly, एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है. So 3.011 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स में होंगे 3 into 3.011 into 10 to the power 23. So अब आप मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं. Now next question. Calculate the number of moles present in 350 centimeter cube of carbon dioxide gas at 273 Kelvin and 2 atmosphere. सो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें मोल्स निकालना है. तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? N इज इक्वल टू V एट STP अपॉन 22.4 लीटर. पर हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम एट STP कंडीशन नहीं दिया है. STP कंडीशन इज प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन. क्वेश्चन में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 273 केल्विन. सो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को STP कंडीशन में चेंज करना होगा. सो इन ऑर्डर टू डू सो वी नीड दिस टेबल. So B1 is equal to 2 atmosphere, V1 is equal to 350 centimeter cube and T1 is equal to 273 Kelvin. P2 is equal to 1 atmosphere and T2 is equal to 273 Kelvin. और हमें क्वेश्चन में V2 निकालना है. इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन व्हिच इज P1 V1 अपॉन T1 is equal to P2 V2 अपॉन T2. यहाँ पे हमें P1 V1 T1 P2 और T2 पता है. We will put it and calculate V2. So on calculation V2 is equal to 700 centimeter cube. So in the formula, volume should be at STP and also in liter. So 700 centimeter cube को liters में convert करना होगा. So it will be 700 by 1000 liter or 0.7 liter. Now use this formula and calculate number of moles. So type of numericals we are doing here will help you to solve any type of mole concept numericals. So let's proceed to the next type of question, calculating mass of one atom or mass of one molecule. So we have a question, calculate mass of an atom of silver. So we can do it within 2 steps. हम जानते हैं कि mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms is equal to gram atomic mass. और सिल्वर के केस में ग्राम एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम. So using unitary method, mass of one silver atom will be 108 upon 6.022 into 10 to the power 23. Now the rest part is maths. So solve it and let us know what is the answer. Or you can check your answer in the comment section.